Everybody should think about politics. What do you think of the BJP? BJP did so many excellent things and executed so perfectly. I am ready to vote for BJP. But BJP will not at all win in our state. You like Pavan Kalyan? Yeah, I like Pawan Kalyan because I like the way he talk with the public. हम तो टीडीपी आने के लिए कोशिश कर रहे हैं. In my opinion, Jagan done nothing. चंद्रबाबू नायडू का विजन और मिशन बहुत एकदम ऊंचा है. बांदा से यहाँ कैसे आ गए? भगवान जी बुला लिया इधर. पवन कल्याण और जगन मोहन रेड्डी ये सब आए थे कोई? इनको नहीं मालूम, जगन मोहन रेड्डी को मालूम. क्या बनना चाहते हैं? आईपीएस बना जाता है. ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप. प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी. प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी. It is doing very welfare schemes very good. But in development means there is a lot of gap communication back. When compared to other states, our AP is a fabrication state. After 10 years, after this is the 10th year, I think. We are getting another election, means third time election in this state. Still now, no one given any special status or no one given any special package to this our Andhra Pradesh. Narendra Modi given a special package to Chandrababu Naidu to develop the AP, but he did not do anything. Whatever the Amaravati, the capital region, that region is a farmer's agriculture land. For every year, almost three times the crop will be grown. In that place, Chandrababu Naidu established Amaravati, the capital region. But because of that capital region, there is no crop to the farmers at their surroundings. So that's why I heard they are protesting also. yes, they are The farmers protesting are also. protesting. Yes. Yeah. What they think means it will be developed like a Hyderabad. Like that, every farmer think and they given permission and they given lands to the government at that government TDP. What they taken the lands they utilizing for other purpose, but they are not at all used for developing as a capital as Andhra Pradesh. Y.S. Jagannath Reddy think that Vizag is the 9th largest country in our world. If we put some more effects for Vizag, we can establish. Vizag is not a country. Vizag is a city. It's 9th largest city in the country. AP. Yeah, Yes. Andhra Pradesh. Not in Andhra Pradesh. In our In a country. Also. Yeah. In our country also, it is the 9th largest city. Whatever the Y.S. Jagannath Reddy think, if we put some more effects on Vizag, we can establish an excellent capital city when compare like Mumbai and Hyderabad, like Chennai. Like we can easily establish a capital if we put it some more lot of money. If Y.S. Jagannath Reddy, if Chandrababu Naidu again, maybe some more 10 years they became a CM also, they cannot do any development in Amaravati region. Because I am a person from Vijayawada region, Okay. Amaravati is just 20 kilometers for Nearby. us, nearby. So as per as a student and as per as my knowledge and I am an advocate, I am telling all this one. Even each and every public have to know the situation of about our economy, our expenditure, each and everything. Based on that, the people will ready to vote. Now they are telling that Y.S. Jagannath Reddy cannot do anything. Up to now, the Y.S. Jagannath Reddy did so many things. You are just copying a super sixer from Congress government, the TDP people. That super sixer is from Bangalore to, Karnataka to Telangana. But YSRCP is offering mainly 3 schemes, na? Yes. Vidya Devina, Vidya Devana, Ammavadi. Ammavadi Vasudha and Devana. yeah, Yes. ठीक है. In southeastern countries, they are giving just free medical and free education. Y.S. Jagannath Reddy, what I don't know, he's thinking, he's giving free medical and free education. So that's why he put in more and more amount on that education. But and I'll tell you, I visited Anantapur, development. ठीक है, and there is a small village, Mukundpur, okay, and there is such a water scarcity state. You get the water by tanker, and the Musambi there, the Musambi farmers, they are in utter crisis of water. Though I understand there is the geography is something like that, that receives the lowest rainfalls in the country, and the soil is not fertile, it is not erosionous कि वहाँ पे कोई क्रॉप उगेगा, बट स्टिल जहाँ पे जितना हो रहा है वहाँ पे देर इज नो वाटर सप्लाई. There is no water supply. I don't know. I don't know. I think you don't know about Chandrababu Naidu.
When Chandrababu Naidu is a CM in 1919 to 2004, there is no rains in our state. Whenever 2004, Rajshekar Reddy came, 2009 and 2004, 2 times are heavy rains, several rains, and there is no water problem. After 2014 to 19. But what Chandrababu about the Naidu- dam Yeah, that had wait. that had Chandrababu been Naidu is a CM. under construction? Wait. Chandrababu Naidu is a CM from 2014 to 2009. Even God also not supported for the rain. So When what- compared to them, even God is How can you supporting to compare YS Jagannath Reddy. the natural thing to the human-made things. Yeah, I'm telling that only. If YS Jagannath Reddy, after coming to 2019 CM, before 2014 to 2019, Chandrababu Naidu dig a lot of soil from the rivers and lakes and etc. etc. Even each and every people that we voted for YS Jagan, he cannot do. There is no soil. If soil is there means everyone can construct a building. Whenever they constructed a building, there is a lot of works for painter, for wooden work, for transportation, for iron works, for soil works, for that rock stones, that Itukuralu something. The lack of soil, there is lot of work is not there in 2014 to 19. After 19, YS Jagannath Reddy came, there is a heavy rainfall and floods. Then whatever the soil they digged, all was covered in that rivers. YS Jagannath Reddy came and he given that to private persons. They dig in soil and they are selling. But later they are doing the work purpose. All YCP MLAs and YCP ministers, they are sold in soil to other states. As a YCP die-hard fan, I am feeling sad. If they utilized that soil in our state, so many developments will be completed and so many that occupation will be there for our state people. ओके सो हम जिस शख्स से बात कर रहे थे वो वाईएसआरसीपी के डाई हार्ड फैन है, Yes. ठीक है, बट उनका जो प्रोफेशन है वो उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हम उस पर बात करेंगे. क्या नाम है सर आपका? I don't want to inject my profession into this. बट स्टिल somehow you are connected. What is your name? My name is Vinay Reddy. And what do you do? I am advocate. Okay, so don't you want told to something involve else. my I don't want to involve my profession in this one. Okay, I am telling. I am working for TDP. You're working for TDP. TDP, yes. And as As a campaign manager. a campaign manager. Okay. Okay. But I am ready to vote for YS Jagannath Reddy because he did several things and we had hope he will do some more. But if we waited for in Chandrababu Naidu, there is a lot of development in Hyderabad, not in Andhra Pradesh. Whenever the state was bifurcation, they given 10 years permission to use Hyderabad as a capital. But he came here Okay. and he did not develop here. But his home is there in Hyderabad, his family is there in Hyderabad, each and everything property is in Hyderabad. He want to develop their place because there is a land value and that business value is there. So there is nothing in the state, but he want to be CM in the state. He don't want to develop the state. So while I was talking to some people here, जो यहाँ पे street vendors हैं and everyone, they were like कि there is no freedom here. I can't speak. Why is that? That I is will tell for the government. Actually, YS Jagannath Reddy given so much of freedom to YSRCP MLAs and YSRCP local leaders. In 2014 to 19, Chandrababu given that one. They used that Janmabhoomi committee and they taken money from other sides. But in this YSCP government, Jagan established a Sachvalayam scheme. Sachvalayam that work. Because of that Sachvalayam system, the leaders are not at all having a chance to collect money from the people. They are if the person is calling means they are going for fight. Arey bhai, maake emi ledu. We don't have anything. What we have to do? Like that they are telling. YS Jagannath Reddy giving direct amount to B2B system. Direct the government to bank to people. Whatever the beneficiaries are there, they are taking. So this is the main reason that that people think that YSRCP will be in power this time. Yes. People are thinking that we need YSCP government again. What people are not understanding means, in 100 people... I'll also talk to you. I want to talk to other people also. How, what do they think? Do you understand Hindi? आपको हिंदी आता? नहीं आता? आपको आता हिंदी? नहीं आता? अच्छा.
अगर हम बात करें यहाँ पे इकोनॉमी की, लाइक द टूरिज्म इकोनॉमी, लेट्स टॉक अबाउट, ठीक है. So do you think that how this is affecting Tirupati in development? I think did you see that bridge, Tirupati bridge? It was completed in YCP government only. So you are Yes. a die-hard fan. See, ma'am, it's a true, ma'am. I'm a diehard fan of YCP, but no problem. It's a true. What do you think? You are talking about the state. Let's talk about the center politics also. Okay. What do you think of the BJP? BJP did so many excellent things, and it will be so perfectly. I'm ready to vote for BJP, but BJP will not at all win in our state. And BJP is what BJP is doing means BJP is fully going in a systematic way. That too in a like uneducated people will suffer for that BJP schemes and BJP development. Whatever the educated people, they can understand, they can ready to vote for BJP. PM Modi has increased his visit over the last years in the southern states, in the southern part of this country, and he is trying to build a stronghold here also, slowly and steadily. What is the use? They are taking more and they are collecting more and more taxes from South India, but they are giving that all the beneficiaries to North India. How can you say that? How can I am saying that whatever the budget they are releasing, if we check in means, I don't know about North Indian economy, but what I check in means, every time what the taxes they are collecting from South India and what the budget they are giving and remaining budget where is they are utilizing for North India. It's not at all their problem. They have to sustain in political, so that's why they are doing. Sometimes for every 10 years, the PM will be one be South Indian, one will be North Indian. Then India will be a united India. Otherwise, like Pakistan, South India, North India will be also divided in future. That's what you think. Yes, And that's what you're, as an educated person, also as a political analysis. But I will not support for that one. People are suffering, ma'am. They don't know the full-fledgedly about the politics. They know the leader is coming, we have to go. The leader is going, we have to say bye. The leader is the election is coming, we have to vote. The leader is giving, we have to take him. They don't know how much they are paying the taxes, how much they have to pay, how much. Also, there is one thing that I was talking to some labor class women in the Telangana region, okay, in Khairtabad, and they said that people give us money to vote. Is it like here also? Everywhere in the India. When compared to with other states, Telugu states MLAs are expending more and more money. They will start with 1K, they will spend with up to 5K. 1,000 to 5,000 they will give for vote. If any person were coming and asking me to take money and vote, I will ask at least 10 lakhs. Otherwise, they will not do anything for us after they became an MLA. But then why don't we waste our vote? We have to take 10 lakhs at least. Otherwise, we don't have to take money and we have to vote. So हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं. क्या नाम है आपका? Likita. Likita. Yes. Okay. So अभी he was saying me that you are a fan of Pawan Kalyan. And why? You like Pawan Kalyan? Yeah, I like Pawan Kalyan because he talks very aggressively and I like the way he talk with the public. Okay. और Jagan Mohan Reddy? No, I'm not his party. I'm only Jansena party. You are from Janasena Party, JSP. You Yes. support. Yeah, I definitely support Jansena party. Why? Why? Because we have to give chance to that party also, Jansena party always. Because Jagan, in my opinion, Jagan done nothing in these 5 years. In your opinion, Jagan has done nothing in 5 years. Yeah, because But- I'm the youth and so She is from Telangana. What she know? no. So many people, so many youth are suffering with the job. They don't get job. They don't get job. अभी we were talking to some people. हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात कर रहे थे. कुछ यूथ थे, कुछ यंग लड़के थे. तो हम उनसे बात कर रहे थे. उन्होंने भी ये चीज़ हाईलाइट करी थी कि यहाँ पे जॉब्स की स्कार्सिटी है, जॉब्स की कमी है यहाँ पे. अगर आपको आईटी सेक्टर में भी जॉब करना है तो या किसी सेक्टर में जॉब करना है अच्छी कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में,
तो आपको बैंगलोर जाना पड़ेगा, चेन्नई हैदराबाद। जाना पड़ेगा, हैदराबाद जाना पड़ेगा, तो इन सारी जगह जाना पड़ता है. Yes, definitely. All in Hyderabad, compared to Telangana, so many Andhra Pradesh people are there. आप इधर आ जाइए. No, come this side. So many members are from Andhra Pradesh in Hyderabad. Lot of बट यहाँ पे तो अलायंस है ना, बीजेपी, जेएसपी एंड टीडीपी अलायंस है. yeah, they will definitely win. They will definitely win. So it's like BJP will win from here. Yes, What do you think on PM Modi? he is a great political leader. And He's a great political leader. What has he done? What do you like about him? he constructed Ayodhya, He constructed Ayodhya. Ram Mandir. Have you been to Ram Mandir? No, not it. Not yet. You want to visit? Yeah, definitely. The support of your media. Yeah, with the support of media. What else? What else? As a female, as being a female, what issues do you face here? Are there any issues that you are facing here? No. No. Unemployment. Unemployment is there. Hmm. Okay. Also, female are not that vocal and they are not politically active that much. If we see in the Indian scenario, so they are not very much political active and they are not that opinionated. उनका कोई अपना opinion नहीं होता है या उनको बोल दिया जाता है कि हाँ जो घर वाले वोट देने जा रहे हैं आप भी उसी पे वोट दे के आओ. So what do you have to say on that? Do you choose your vote or you are like कि हाँ जो घर वाले वोट दे रहे हैं हम उनको वोट देंगे? I follow my family to vote. If they say anything, if they say one party means I definitely vote to that party. I don't have particular decision. But you said that you like JSP candidate, Yes, Pawan Kalyan. yes. So will you be voting for him or what will your family say you will vote for him? Actually, I'm not Andhra Pradesh. I'm not from Andhra Pradesh. I'm from Telangana. So that is why you are supporting. Ah. She's using intelligent mind. Okay. So Why female are not coming to express their votes in public means most of the people will criticize them. Whenever the female will not at all listen that criticize votes, they will be the number one in India political leaders. We see in Navneet Kaur or something. So many. Navneet female- Rana, Yes, so many female leaders is also there. Smriti Irani, Indira Gandhi, Jayalalitha. They did not at all listen other words what they are doing. If they listen, they will forget it. They will do what they want to do. Like that, each and every woman have to be in future. Okay. Yes. Mostly, I listen to the elder members. If they know about political, they have political knowledge. So they have know all the things what they done to us. So I can follow them and I vote to the person. Okay. Hmm. So you are saying कि आप अपने घर पे बड़ों की बात मानती हैं जो जिनको वो बोलते हैं उनको पॉलिटिकल ज़्यादा नॉलेज है तो आप वो समझती हैं और उनके हिसाब से वोट देती हैं. Yes. हमें कुछ और लोग मिले हैं जिनसे हम बात करेंगे. व्हाट इज योर नेम मैम? Aruna, अरुणा. यू हैव ब्यूटीफुल आईज. thank you. So tell us about the Tirupati. What do you feel about Tirupati? You live here only. సూపర్. ఇక్కడే ఉంటాను తిరుపతిలోనే. English में ఇక్కడే ఫ్రమ్ తిరుపతి. from Tirupati only. Okay. Elections आ रहा है. You know elections are here. What do you think? Who will win here? అభినయ్ రెడ్డి. Abhinav Reddy. Okay. Why do you like him? సో సీ గుడ్ పర్సన్. అంటే ఎలా చెప్పాలి, తను దగ్గరుండి చూస్తాడు ఎనీథింగ్. English में तेलुगु नहीं आता. तेलुगु नहीं आता. అవునా? అంటే చిన్న చిన్నవి అంటే చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ छोटे छोटे issues ఇష్యూస్ దగ్గరికి వచ్చి वो देखते हैं, समझते हैं. తెలుసుకుంటారు. థింకింగ్ ఎలా ఉండాలి ఏంటి. స్మార్ట్ సిటీ. अच्छा. They are thinking कि तिरुपति को स्मार्ट सिटी बनाएगा. యా. अच्छा. సో जगन मोहन रेड्डी पे क्या सोचता है आप? సో మై బ్రదర్
ही इज योर ब्रदर. Okay. So manifesto is very good. Manifesto is good. What scheme do you like? Vidya Devuna, Vidya Ammavadi. Devuna, हाँ, Raitu Bharosa, हाँ. whatever. आपको कुछ बेनिफिट मिला इससे? Ammavadi, अम्मावड़ी से. Vahana Mitra. वाहन मित्रा. आपको अम्मावड़ी से क्या सपोर्ट मिलता है? लाइक यू सेंड योर स्कूल, यू सेंड योर किड्स टू स्कूल. Yeah. School. This is my son. हाँ. తనకి 3 years నుంచి 3 years నుంచి అమ్మఒడి 3 ईयर से आपको अम्मावड़ी स्कीम का हेल्प मिल रहा है. ओके. సో ఓకే ओके ओके, थैंक यू. हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे कि यहाँ पे राजनीतिक माहौल कैसा है, उनकी क्या मुद्दे हैं वोट डालने के लिए. हाय मैम, व्हाट इज़ योर नेम? myself प्रेमा. प्रेमा. आपको हिंदी आता? हाँ जी. अच्छी बात है. लैंग्वेज थोड़ा सा बैरियर है यहाँ पे, तो हम लोगों को कम्युनिकेट करने में, बात करने में थोड़ा दिक्कत होती है इधर, बट आपको हिंदी आता है. बहुत सारे लोग अच्छे से ही बात करते हैं इधर. हाँ. हाँ, हिंदी तो सारे लोग मैक्सिमम जानते हैं. अच्छा. पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हैं? हाँ, हस्बैंड तो बहुत सारे अच्छा, आप आपके हस्बैंड हैं. हाँ. हेलो सर, क्या नाम है आपका? रविंद्रनाथ. रविंद्रनाथ. पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हैं? क्या लगता है कैसा है चुनावी माहौल यहाँ का? ఇప్పుడు ఎట్లా జరుగుతా ఉంది, ఏమనుకుంటా ఉంటారు అనే. हम तो टीडीपी आने के लिए कोशिश कर रहे हैं. अच्छा, आप लोग टीडीपी को TDP लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं. अच्छा, क्या मुद्दे हैं आपके? वाई डू यू, मतलब आपके यहाँ पे तिरुपति में क्या मुद्दे हैं? वाई विल यू वोट फॉर टीडीपी? व्हाट आर योर? चंद्रबाबू नायडू का विजन और मिशन बहुत एकदम ऊंचा है ना. उनका विजनरी थिंकिंग बहुत अच्छा लगता है ना. सो डेवलपमेंट अच्छा करता है करके इसलिए. तिरुपति को स्मार्ट सिटी बनाने जी का है. जी जी, वो अच्छा बनाते हैं करके इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं. ये पूरा बनाया चंद्रबाबू नायडू ये. अच्छा. हाँ, ये पूरा उनका तारीफ है, वही पूरा अच्छा से बनाया कि हाईवे पूरा उनका ही विजन है पूरा. अच्छा, मैं आप सिंस यू आर अ फीमेल वोटर, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे महिलाओं को, फीमेल्स को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो आपका क्या कहना है उन पे? और राजनीति में बहुत सारी महिलाएं नहीं आती हैं. Everybody should think about politics and we have our क्या बोलना, right for vote we have to. मेरा बेटी है. हाँ, व्हाट इज द नेम? సుష్మిత हाँ, आप क्या कह रहे थे? राइट फॉर वोट. आप यू आर अ वोटर? ओके, सो यू आर नॉट वोटिंग दिस टाइम. Next नेक्स्ट year. नेक्स्ट ईयर. నెక్స్ట్ ఇయర్ next elections, next time elections I आप बहुत एक्साइटेड हैं. yeah, she is very much excited. It's my first round. अगर आपको इसको पूछेंगे तो भी किसको आप वोट करेंगे करके बोले तभी वो भी बोल देता है टीडीपी करके. तुम वोट करोगे? ఎవరికి ఓట్ చేస్తావు నాన్న నువ్వు? Cycle. సైకిల్. साइकिल टीडीपी. ఎవరికి టీడీ సైకిల్ ఊరితే Chandrababu Naidu. चंद्रबाबू नायडू को वोट करोगे? ओके ओके. थैंक यू मैडम. आप इतना एक्साइटेड हैं क्यों? आपको इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में? A little bit. A little bit I'm having interest. सॉरी, लिटिल बिट. Little bit of interest. लिटिल बिट ऑफ इंटरेस्ट. हाउ कम? व्हाट डू यू, हाउ डू यू गेट दिस इंटरेस्ट फ्रॉम? आपको क्या क्या लगता है? From father. My father always watches the TV, so that I got little bit of interest. अच्छा, तो पापा टीवी देखते हैं हमेशा, पापा टीवी पे न्यूज़ देखते हैं, पॉलिटिक्स देखते हैं, तो आपको उससे इंटरेस्ट आया? Yeah. ओके, थैंक यू सो मच. ये बहुत अच्छा इंटरेस्ट है. अगर माँ बाप को देख के अब बच्चों में पॉलिटिक्स का इंटरेस्ट आ रहा है तो दैट इज़ वेरी गुड. थैंक यू. हमारे साथ एक और अम्मा हैं, हम उनसे बात करेंगे. बैठो ना अम्मा. हम भी बैठ जाए. हम ले लेते हैं ये चेयर, इधर बैठने का आपको, इधर मैं बैठेगी. कैसी है अम्मा आप? अच्छे हैं मैम. इधर क्या करती है आप? पानी पूरी लगाते हैं इधर. पानी पूरी लगाती है. अच्छा रेंट दुकान का है, घर का है, रेंट पे रहते हैं. अच्छा.
ये तिरुपति से हैं? यूपी से यूपी से? कहाँ से? कानपुर बांधा। कानपुर बांदा से हैं आप? कब आई? 10 साल हो गए हमको। 10 साल हो गए यहाँ पे आए हुए। कौन कौन रहता है? पूरा परिवार यहाँ रहता है? एक बेटी, एक बच्चा, मैं, मेरा पति, 4 लोग रहते हैं। बांदा से यहाँ कैसे आ गई? भगवान जी बुला लिया इधर। कैसे भगवान जी तो के बुलाए ली नेहर? अब भगवान की महिमा है कि आके इधर अपना व्यापार चला रहे हैं, खा रहे हैं, पेट रोटी चला रहे हैं। दर्शन करे आए रहू या ऐसा ही ना आए रहू? दर्शन करे आए थे, इधर देखा, डाल लिया। हमारे रिलेशन वाले हैं ना इधर। अच्छा, आपके रिलेशन वाले हैं इधर इसीलिए? धंधा पानी सही चलता है? नहीं चल रहा माँ। नहीं चल रहा? क्या दिक्कत है? नहीं व्यापार चल रहा है, दोनों लोग पैसा अलग अलग लगा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दोनों लोग देख रहे हैं, व्यापार नहीं चल रहा। गांव पे खेत भी नहीं है। गांव पे खेत भी नहीं है और बच्चा लोग सब यहीं पढ़ता है? यहाँ पढ़ते हैं, विजेता में पढ़ते हैं। अच्छा, स्कूल विजेता। सब यहाँ पढ़ते हैं। दिन भर में कितना कमाई हो जाता है? दिन भर 4 बजे से खोलते हैं, कितना कमा लेते? 2-2.5 हज़ार कमा लेते। 500 भाड़ा है, 3,000 का मार्केट पड़ता। दोनों गाड़ी का 2-2 हज़ार कमाते तो क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता। महंगाई है? महंगाई है। वोट देने जाएंगी? अभी तो वोट पड़ने वाला है ना? अब हमारा इधर का वोटर लिस्ट नहीं है, गांव पे है। हाँ तो वही गांव पे है। इधर भाड़ा है, रेंट है 15,000 रेंट है, 5,000 घर का है। अब इधर से जाएंगे 10,000 भाड़ा लगेगा, इसलिए नहीं जा रहे हैं। पिछले वर्ष गए थे। पिछले साल गई थी 5 साल पहले। अब इस साल नहीं जाएंगी क्योंकि भाड़ा बहुत ज़्यादा है और किराया भाड़ा बहुत ज़्यादा लग जाएगा आने जाने में लग जाएगा। कब गई थी आखिर बार बांदा? पिछले साल जून में आए थे। मई में गांव गए थे, जून में आए थे। 1 महीना बाद आए थे। 1 साल हो गए। इधर आप लगाती हैं रोड पे तो सब नेता वेता सब जाते होंगे रैली करते हुए? कल गए थे हम, सब लोग खड़े थे, देखते थे। कौन कौन गया था? तो चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू। अच्छा, और पवन कल्याण और जगन मोहन रेड्डी ये सब आए थे कोई? इनको नहीं मालूम, जगन मोहन रेड्डी को मालूम। आए थे? इधर से रोड से निकल गए थे। कोई मिला था? कोई रुक के बात किया था? इधर बात कोई नहीं किया, रोड पे निकल गए थे सब, गाड़ी पे। अब जब भाषा दिक्कत होती है यहाँ पे, कितना दिक्कत हुआ यहाँ पे जब आप आई? झगड़ा कर रहा बाजू वाला। पहले उधर 5,000 में लगाते थे, 5,000 रेंट देते थे फुटपाथ का। 20,000 वो बाजू वाला बोल दिया 20,000 दूंगा। 1.5 लाख एडवांस लिए था हुनर। बाद में हुनर क्या बोला, तू निकाल ले, वो 20,000 दे रहा, उसको गाड़ी दे दूंगा। इसलिए आंसू वोट के लिए नहीं जा रहे हैं। हमारा समस्या बहुत भारी है, रोज रोज झगड़ा करता है बाजू वाला। ये पानी पूरी लगता है ना इधर, आवा तुम दे दे तो ये झगड़ा करता है। उधर से निकाल के इधर 15,000 में लिया दुकान। अब ये चल नहीं रहा, परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, क्या करें। ये आपका बेटा है? बुलाइए ना उनको। और आपके पति कहाँ हैं? पति इंडियन बैंक के पास लगाते हैं। अच्छा, और लड़के का क्या नाम है? रोशनी। लड़की का? रोशनी। लड़की का रोशनी नाम है और लड़के का? हिमांशु। हिमांशु भैया हरिया वा। बाद में 1.5 लाख पैसा हमारा रिटर्न कर दिया है। बाद में इधर दुकान ले लिया हम 15,000 में। अब हमारा कुछ नहीं बच रहा, इसलिए गांव नहीं जा रहे। क्या करें, मजबूरी है। बुलाओ ना। ए बाबा आज पैसे का है। एक मिनट, हम हिमांशु के पास चलते हैं जो इनका बेटा है, उनसे भी बात करेंगे। अरे तुम चाट बना रहे हो यार? नहीं थे। क्या करते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास। 10th क्लास? 8th में। 8th में? और कितने बजे स्कूल, कितने बजे जाते हो? इसको ये बंद है, इसीलिए मम्मी हेल्प करने आ गया।
अच्छा, स्कूल बंद है इसलिए मम्मी की हेल्प करने आ गया। और वैसे स्कूल होता है तो कितने बजे जाते हो स्कूल? नहीं स्कूल जाता हूँ, सीधे पे नहीं आता। इधर पे नहीं आते। क्या बनना चाहते हैं? आईपीएस बनना चाहता हूँ। हैं? आईपीएस। आईपीएस बनना चाहते हैं। पढ़ाई लिखाई बहुत मेहनत लगती है उसमें। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी का है। हिंदी का है। अच्छा, खूब पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है। कैसे कैसे करते हो मम्मी की हेल्प? जैसे प्लेट उठाना है और लोगों को सामान पहुँचाना है, ऐसा करता हूँ। प्लेट उठाते हो और मम्मी का सामान पहुंचाते हो। घर गए कितने दिन से नहीं गए? जैसे हमारा घर इधर पे है पास में। नहीं नहीं, बांदा। उधर पे एक महीने हो गए, 1 साल हो गया होगा। 1 साल हो गया होगा। 1 साल हो गया। अच्छा। और बहन बहन क्या करती है? बहन कौन सी क्लास में? 10th क्लास में। 10th क्लास में। जब हम ऐसी चुनावी कवरेज में निकलते हैं तो हमें अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के लोग मिलते हैं। और जब हम आंध्र प्रदेश के तिरुपति में आए कवर करने इलेक्शंस, तो हमें यहाँ पे बांदा का एक परिवार मिला जो यहाँ पे चाट बेचता है, गोलगप्पे बनाता है। उनकी अलग दिक्कतें हैं, अलग परेशानियाँ हैं, साल भर से घर नहीं गए हैं, किराया भाड़ा नहीं दे पा रहे हैं, सही से बच नहीं रहा है,